Okay, students, let us start. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फॉन्ट में फॉन्ट फैमिली, स्टाइल एंड साइज को, और इसके कोड हम करेंगे, इसका कोड करेंगे थ्रू द CSS। अब सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कि इन दैट फॉन्ट फैमिली में क्या क्या पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू द सुमिता अरोड़ा बुक, और उनमें से हमें किस पॉइंट्स को पढ़ना है। इफ यू डिस्कस अबाउट द फॉन्ट, तो font family have, in this section we are going to talk about, just right there, in this section we are going to talk about the font and their related properties in CSS context. Different font properties that we are going to discuss under this section include font family, font style, font variant, font size and font weight. But हमें सिर्फ पढ़ना क्या क्या है? Then font family, font style and font size. Only three. And how to use that? अब कैसे इनको यूज करेंगे? सभी आप फैमिली के नाम बात करते हो. So in the family, there are two types of the name used to categorize the fonts: family names and the generic family. So let us understand the difference between these two terms. कि अब इन दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है? क्योंकि फैमिली नेम तो पता है, जैसे फॉन्ट्स फैमिली नेम हो गया, देन जेनेरिक नेम. तो फैमिली नेम इज दैट कि नेम ऑफ द फॉन्ट इज इट्स फैमिली नेम. मीन्स कि जो नेम ऑफ द फॉन्ट है, सो नेम ऑफ द फॉन्ट इज इट्स फैमिली नेम. एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑफ अ फैमिली नेम कैन बी एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और टॉमा एक्सेट्रा. एंड द जेनरिक फैमिली की बात करें तो जेनरिक फैमिली कैन best the described as group of family names which uniformed appearance. An example is sans serif, which is a collection of fonts without feet. जो sans serif है, which is a collection of fonts without feet. So ये आपका family generic है. This is generic family. So generic families can best the be described as a group of family name. तो फर्स्ट हम चलते हैं, कोड देखते हैं. आप यहाँ पे देख लो, एग्जांपल दिया हुआ है. तो जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन द नोटपैड हियर, एंड इन द नोटपैड हमने यहीं पे लिखा इन द कमेंट टैग में, देन फॉन्ट, दैट्स फैमिली. ओके, and just change their style. I want to change their, going to change their font style. Okay, now font as family. Now HTML, head, title. In the title, just mention the font, that's family, and close the title. We open the body tag and H1. This is example of font, that's family, and close the H1. Then S2, I study, and class, sent H, and close the H2. Now close the body tag and close the
what? We close the HTML finally. Okay. Now save the file. When you're going to save the file in the code 10th h16.html. Okay. Now again we open the notepad and h1. देखिए विदाउट इफ यू अभी आप एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमने जस्ट हैव टू राइट द कोड और व्हेन राइट द दिस कोड जब आप इसको एग्जीक्यूट कराने जाते हो आफ्टर एग्जीक्यूशन इसका आउटपुट क्या आता है 10th and just wait now there's color is the this is the example of font family I studied in class 10th. Okay, and now I'm going to change here. अब हम यहाँ पे हम चेंज करने जा रहे हैं और इन दिस चेंजेस जब आप इसमें कोई जब चेंजेस करते हो so what type of the changes the requirement is there अब किस टाइप का चेंज रिक्वायरमेंट फर्स्ट वी चेंज देयर फॉन्ट फैमिली इट मींस देयर स्टाइल लिखने का जो मेथड है जो कंटेंट जो लिखा हुआ आ रहा है then h1 curly braces and font that's family then colon we use the colon and अगर आपको किसी का फॉन्ट स्टाइल याद है नेम याद हो दैट्स गुड अदरवाइज आपको याद है आप एग्जाम में दिया हो जैसे सपोज दैट आई एम गोइंग टू टेक द दिस वन ब्लैक केडर ब्लैक एडर आईटीसी हम इसको चूज कर लेते हैं हमने इसको चूज किया देन कंट्रोल वी कर दिया हमने यहाँ पे ब्लैक एडर आईटीसी सेमी कॉलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड अभी आप एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल 10th h16.css हमने इस फाइल का नाम लिख दिया 10th h16.css जब इसको हमने एग्जीक्यूट कराया अब आप यहाँ देखेंगे ये तो चेंज ही नहीं हुआ चेंज न होने का रीजन क्या था वाई दिस कोड इज नॉट अ चेंज जब ये कोड चेंज नहीं हो रहा द रीजन इज दैट सिर्फ रीजन ये हाँ यस प्रज्ञा आई नो दैट यस प्रज्ञा सर आप ऐड नहीं किए सर एचआरईएफ और सर लिंक सर नहीं ऐड किए यस एग्जैक्टली हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ है सो फर्स्ट वी एस्टैब्लिश द कनेक्शन हम सबसे पहले क्या है कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हम फर्स्ट हम कम राइट द कोड है कि li एक लिंक then type link type is equal then just you write the name of the file and the link type is text or css then link type equals to text or css then relation equals to this is a style sheet stylesheet style sheet so then link type equals to text or css then relation equals to style sheet and href is equal what href equals to what this is the we write the code 10th h16.css the file name is a css type of the file is a css किस type file css file थी then save the file okay replace okay there's some issue now just wait again just I'm going to code option now open with a notepad again just to write the code link again I write the code link type is equal text /css then relation equals to style
seat, then link type equals to text or CSS, the relation equals to style sheet, and the type of the file href. Href is equal 10th h 16.css. ओके, सेव द फाइल, फाइल सेव हो गई। अब आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करा सकते हो। जब जैसा आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, जस्ट चेक देयर स्टाइल। द प्रीवियस वन इज दैट कि दिस इज एग्जांपल ऑफ फॉन्ट फैमिली, this is the example of font family, this style of the change, and I study in class 10 h is a remain same. So if you want to change this one, अगर आप इसको भी change करना चाहते हो, then you can also use there, आप CSS में then you need to change their CSS. अगर आप same चाहते हो कि if you want to keep the same format, then just use here the comma h2. If you use the comma h2, or in the comma h2, just you need to that comma h2. Now down this one and just refresh it. देखिए जैसा आपने इसको रिफ्रेश करा, then it's the font style or the change font family. So this is the use of the font family. Font family is used that कि what type of the text will appear after the executing the code. कि जब कोड को एग्जीक्यूट कराओ तो किस टाइप का आपका वो अपीयर होगा। क्लियर? एंड आफ्टर दैट, इसके बाद लेटर ऑन H1 S2 font family, black header, ITC, then, and just I'm going to use some body. Body is the node is given there. So body and their background color BACKZROU and the background, the color COLOR is equals to yellow. Okay. Now, and their output is here. Now, this is example of this one. Now, and after this, and style. अब हम font style, font family हो गया, then font style, and in the font style there are different types of things. Normal, oblique, हम उनको यूज करेंगे। ठीक है, just if you font style that, अब यहाँ पे उन्होंने एरिया लिखा, देन सेंस सेरिफ भी लिखा हुआ है, हमने सेंस सेरिफ छोड़ा, देन फॉन्ट फैमिली, देन सेरिफ, जस्ट यू कैन यूज, आप कर भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इशू नहीं है। बेंट फॉन्ट स्टाइल, इन दैट फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज दैट suppose that if you take the styles of oblique, italic, then you can use the normal also, you can use that, you can also use that normal, but normal is come in the font variant, under the font variant. However, if the font italic forms are generally cursive in nature, while oblique faces are the typically sloped, just because the title झुका हुआ, and versions of the regular face, it is impact on the regular, अगर आपने कोई चीज कंटेंट को रेगुलर फेसेस में लिखा हुआ है, देन इट द इम्पैक्ट, ये तब उस पर आपका इम्पैक्ट डालता है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अभी हमने यहीं पे जस्ट हम गोइंग टू चेंज देयर, मैंने इसको यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल V, okay, control S, this one also there, and is a previous font style was this one, ये है। I'm going to refresh this one, हमने इसको refresh किया, and this is example of the font family I studied in class 10th H, ये आप कैसे आ रहा है। Now I'm going to change this one, अब मैं इसको थोड़ा change करने जा रहा हूँ, जैसे मैं इसको change करता हूँ, okay, style, then
फॉन्ट द स्टाइल STYL इसी का पार्ट है। फॉन्ट स्टाइल देखिए आप दोनों को चेंज करो H1 H2 दोनों को। इफ यू वांट टू चेंज द सम सिर्फ सिंगल H2 या H1, अगर आप सिर्फ H1 को चेंज करना चाहते हो, सो फॉर दैट यू कैन यूज द सम अदर मेथड। बट अभी हम दोनों को भी चेंज करने जा रहे हैं। सो फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट से इटैलिक ITALIC इटैलिक। ओके नाउ देखिएगा अभी आप, अभी ये इटैलिक तो है नहीं, इज अ सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी आप देख लीजिए। ओके तो हम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस वन। अभी हम देखा कि जस्ट इज अ इम्पैक्ट, ये थोड़ा सा कंटेंट आपका थोड़ा सा टाइल्ड हो चुका है। दिस इज द इटैलिक एंड इफ यू यूज ऑब्लिक तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? एंड इफ यू वांट टू चेंज द सब ओनली द H2, सिर्फ आप H1 को चेंज करना चाहते हो, एंड तो जस्ट रिफ्रेश दिस वन नाउ। then H1 heading is like this. H1 is like this one. Now I'm going to just increase their size. Then this is example of font family. Now and this is difference. So there it will be little difference. वो थोड़ा सा आपको difference दिखेगा, the appearance. Okay. And after this, if you have any issue, then you can raise your hand and ask the question. Is anyone? Now, and font family. After that, the font size. The font size is also part of this one. Then font FONT dash font SIZE. Font size. And how to change the font size? The pixels and their percent. So then just in the font size, the properties that you can choose the specify the size of the text through the font size property कि आपको text की जो size है वो कैसे होनी चाहिए. If you choose that, the set the size of the font, the font size property H1, then font size 30px, then strong font size 16pt, then alive font size 120. So it means according to your choice कि आप कैसे रखना चाहते हैं. If you use the pixels, the px you आप use करेंगे. If you use the pt, the point में आप use करेंगे. em, so em and percent तो percent में. So just time to going to change this one. हमने यहाँ पे लिखा font that size then 20px. Okay. अभी देखिए now and in the H2 हमने H2 लिखा semicolon and then font that size SIZE then 20%. Okay. अब आइए then हम चेंज इसको रिफ्रेश करते हैं. I'm going to refresh this one and it is an impact on your output. ये आपके आउटपुट पे इम्पैक्ट आएगा. देखिएगा 20 आपने जो px किया था दिस साइज इज दिस वन, दिस साइज ये हो गई. एंड जो 20% किया था तो 20% साइज देखो आप कितना आ रहा है. 20% था मे बी ना 20%. then just check there 50%. देखिए आप साइज इंक्रीज अभी नहीं हो और इंक्रीज करते 100 now. Clear? So this is the font. आपका font style भी हो गया. Then font size भी complete. So font option is also clear. Completed this topic. कि आज आपने font पढ़ा, font के अंदर आपने family पढ़ा, then style पढ़ा आपने, then और आपने size भी पढ़ा. Clear? If you have any issues, then you can raise your hand and ask the question. No one? Okay, that's great. I'm going to stop the recording.